Hello students, this video especially I made for maxima and minima. This is the part 1 of the maxima and minima. Class 12 means application of derivative, the last part of the application and derivative, maxima and minima. What is the meaning of the maxima and minima? I tell you with the graph. In the graph, what is the meaning of the maxima and minima? Like this. You can see in this graph, when the curve turns from the lower point, means decreasing then increasing. And the second thing, when the curve turns into the lower, means the downward direction from here. Here the turn in upward direction, and from this point, suppose A point and B point, then turn into the downward direction. Then again turn into the upward direction. Then again turn into the downward direction. There are so many points maybe. But in the given domain will be given in the question. This point where the curve turn in the upward direction, this point is known as the point of minimum. Minima, इसको minima कहते हैं. And when the curve turns in the downward direction, क्योंकि यहाँ तक highest point पे पहुँच चुका है, इसके बाद वो नीचे आना, यानी this point is the maxima, point of maxima. तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है जब कर्व ऊपर की ओर टर्न करता है, एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा व्हेन कर्व टर्न इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सिमिलरली हियर दिस इज द मिनिमा एंड दिस इज द मैक्सिमा. देयर आर मे बी द मोर देन वन मैक्सिमम पॉइंट, मोर देन वन मिनिमम पॉइंट, बट एट ए टाइम इन वन क्वेश्चन there will not be two minimum point without maximum. अगर without maximum two minimum है, that is wrong, and you will not get the two continuous maximum point without the minimum point. In between there should be the maximum, क्योंकि जब minima होगा तो दो minima एक साथ मिल ही नहीं सकते. How it is possible? तो maximum जरूर मिलेगा. when you get the two minimum point, it means there is one maximum point, or if there are two maximum point, there is one minimum point at least. So this is about the maxima and minima using graph. But according to the definition, what is the definition of the maxima and minima? F is said to have a maximum value. Suppose f is a real valued function. This y is equal to f is a real valued function whose domain is real number. ये कोई है, इसका डोमेन रियल नंबर है. सबसेट आर, यू कैन से द सबसेट ऑफ आर आल्सो, जरूरी नहीं है सबसेट ऑफ आर, मतलब कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ऑल रियल नंबर, बट इट शुड बी द सबसेट ऑफ आर. In that case, f is said to be the maximum value in domain D, किसी भी domain that must contain the taken from the subset of R, if there exists a point x is equal to c, कोई भी point इसमें ले ले, f is equal to c, then f c must be greater than or equal to f x. If this possibility exists, f c is greater than or equal to f x, then the number fc is called the maximum value. Then this is called maximum value and the point c is called the maximum point. मतलब ये हमारा c point पे अगर है, मान लो ये this point है, ये हमारा c है, तो this will be the fc and this fc must be greater than the fx. Similarly, how to get the minima? If this is the point D, suppose in this case, so if this is the point D, then this will be the fd, this value.
तो दिस एफ डी मस्ट बी लेस देन आर इक्वल टू एफ एक्स, देन यू विल से एफ डी इज द मिनिमम वैल्यू एंड डी इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा. दिस इज अबाउट मैक्सिमा एंड मिनिमा. बट in one question maybe you have the 2 or 3 maxima and minima, so you will say that there are the 2 terms of the maxima and minima. One is called the absolute maxima and other is called the local maxima. So how we recognize the which one is the absolute and which one is the local? In this case, if there are the 2 maximum values or more than 2 maximum values, then the out of these maximum values, the one is the maximum one. मतलब इन दोनों में से कोई एक और ज्यादा होगा, इन दोनों में ये जैसे ज्यादा है, तो this is called the absolute maxima and this is called the local maxima. जबकि while both are local maxima, ये दोनों local maxima है, but this is also known as the absolute maxima. तो by this way you can find the maximum value. But what is the method to solve the maxima and minima? In this case there is the one point, and what is the use of that point? Suppose this is the curve, this curve turned from here point A and maybe turned from point B. Okay, in this case this point is called the critical point or turning point. Why turning point या क्रिटिकल पॉइंट? क्योंकि कर्व यहां से टर्न कर रहा है, और दिस इज आल्सो नोन एज द टर्निंग पॉइंट क्योंकि कर्व यहां से. तो देयर आर मे बी वन आर मे मोर देन वन, मतलब एक भी पॉइंट हो सकते हैं या 2 भी पॉइंट. अगर कर्व हमारा यहीं तक है तो ओनली 1 पॉइंट यू विल गेट. इफ कर्व इज लेंथी मीन्स डोमेन इज गिवन एंड you have the curve means the curve turns in the more than 2 points or 2 or more than 2 points, then you will get the 2 or more than 2 turning points or values of x. These are the values of x. So how to find the value, this turning point, how to find? क्योंकि अगर ये यहाँ से turn हो रहा है तो ये if you draw the tangent, then these tangents will be parallel to the x axis. And if the tangents parallel to the x-axis and if you have the curve y is equal to fx, so dy by dx will be f dash x, and because the tangent is parallel to the x-axis, so f dash x is equal to 0 in this case. So you will get the values of x, x1, x2, x3. These are the turning point, and after finding the turning point you can find the absolute maximum or absolute minimum value. Actually in your course especially the question comes from the application of means problem based on the maxima minima, like exercise 7.6 doesn't come in this case, but you can do. If you find the turning point means maximum value or minimum value, how to find? In the exercise 7.6, find the maximum and minimum values if any of the following 1 to 7. क्वेश्चन नंबर 1 to 7. अब हम बताते हैं कि ये कैसे निकलता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन. In this case, without differentiation, can you say that this x square is a negative number, or because this is the real valued function and the domain is all real number, so x square is must be greater than or equal to 0, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, x square always positive.
सो एफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर ये आर इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू तो मिली ही नहीं, बिकॉज इट इज अप टू इन्फिनिटी। सो द स्टार्ट फ्रॉम 0, तो द मिनिमम, ओनली मिनिमम वैल्यू is 0. This is the answer. By this way you can find, जैसे for example question number 5, fx is equal to minus x plus 1 मॉडुलस के अंदर and plus 3. This check whether it is positive negative जैसे भी हो, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम, क्योंकि ये एक मॉडुलस फंक्शन है, ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। दिस पार्ट चाहे x की कोई भी वैल्यू रखे, तो अगर हम x की कोई वैल्यू, ये अगर 0 इसकी मिनिमम, लेकिन बट दिस नेगेटिव साइन विल मेक इट नेगेटिव, मतलब ये तो पॉजिटिव होगा लेकिन ये नेगेटिव साइन इसको नेगेटिव बना दे। जैसे मान लीजिए 2 आया इसमें तो -2 होगा, जैसे मान लीजिए 1 आया तो -1 होगा, 3 आया, अगर तुमने x की जगह -5 रखा तो -5 + 4 -4, -5 + 1 -4, और when the modulus sign is there तो it will be +4, but due to this negative sign it will be -4 + 3। तो ये नेगेटिव साइन इसको कम करता जा रहा है। सो व्हाट इज द, यानी कि तुम लेफ्ट साइड में चल रहे हो, और लेफ्ट साइड में चलने का मतलब ये हुआ कि नेगेटिव हम मिनिमम वैल्यू नहीं पाएंगे बट मैक्सिमम वैल्यू वी कैन गेट। और मैक्सिमम वैल्यू क्या 3 से अधिक हो सकती? नहीं, क्योंकि -1 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, बट इट इज 0 देन 3, तो यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू इज 3 बिकॉज माइनस मॉडुलस ऑफ x + 1, द मिनिमम वैल्यू इज, मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 0 होगी और उसके नीचे फिर निगेटिव में आने लगेगी। सो दिस वे यू कैन, ये क्वेश्चन इस तरह से आते नहीं हैं इन द एग्जामिनेशन, ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कैसे करें। इन सम क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। सो इन दिस केस यू हैव टू डिफरेंशिएट, जैसे मतलब कि वो क्रिटिकल पॉइंट पूछ रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज इफ एनी, एंड आल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। जैसे फॉर एग्जांपल fx इज इक्वल टू 4x - 1/2 x², और पॉइंट्स दिए गए हैं -2 and 9/2, but you have to find the more points in this interval only. So you find, first you differentiate 4 minus x, differentiation, as you know 4 minus x is equal to 0 for turning point, f dash x is equal to 0. You have to write this one, and then 4 minus x is equal to 0, so x is equal to 4. 4 lies between in -2 to 9/2, क्योंकि it is 4.5. Now you have now the three values, 4, -2, 9/2. Every value you put here, so you will get, पहले -2 निकाले तो 4 into -2 -1/2 -2², you will get -8 -2 means -10. Similarly f of 4 निकालें हम तो 4 into 4 -1/2 16 is equal to 8, and then f 9/2 निकालें यानी 4/5, तो 4 into 9/2 -1/2 81/4 is equal to 2 2s are 18 minus 63/8. 63/8. Now what is the minimum value and what is the maximum value out of these three values? तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो गई, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू,
क्योंकि f 4 पे आ रहा है, तो एंड मैक्सिमम पॉइंट इज 4, x इज इक्वल टू 4, द वैल्यू इज 8 एंड पॉइंट इज 4 मैक्सिमम। मिनिमम अब इसमें सबसे मिनिमम कौन है 3 में से, ये मिनिमम है -10, सो द मिनिमम वैल्यू इज -10 एंड मिनिमम पॉइंट इज -2, क्योंकि -2 पे आए। सो बाय दिस वे यू कैन सॉल्व द वैल्यूज, फाइंड द वैल्यूज, and you can do the exercise 7.6. Thank you, all the best.